Hello everyone, welcome to the new session on domains of learning and learning objectives in the series of medical education. So let's begin our session. Our specific learning objectives are to understand the concepts of domains of learning, to understand the need and concept of learning objectives, and to learn how to write the specific learning objectives. Now domains of learning there are three domains: cognitive, affective, and psychomotor domain. So cognitive domain, it deals with the knowledge part. So there are various levels in the cognitive domain. First is knowledge, comprehension, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेलुएशन. सो नॉलेज में क्या है? रिकॉल ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन है. कॉम्प्रीहेंशन, द स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन इन ओन वर्ड्स. एप्लीकेशन, यूज ऑफ कंसेप्ट इन न्यू सिचुएशन. एनालिसिस, a student can distinguish between facts and inferences. Synthesis, a student can build whole from parts and derive meaning from the new whole. And evaluation, that is judging the value or worth of an action. Now second is psychomotor domain. It is involved with the skills. So इसमें levels हैं, 3 level हैं: imitation, control and automatism. Imitation में copying action after being shown an activity. Control, performing an act according to instructions. And automatism, performing a series of articulated acts. Now third is affective domain. It deals with attitudes, communication, ethics, professionalism and other attributes. So इसमें अलग अलग levels हैं. It is receiving. A student is paying attention to what is happening around. A student is participating, exploring and developing interest. It is responding. Student has a consistent behavior which is showing a positive regard. It is valuing. Then organization, a student has clarity about the issues with no conflicts. And value complex, a student is internalizing the phenomena and developing a value complex. Now learning objectives and why we need them. So एक educational जो objective होता है वो एक statement होता है describing the expected results of learning as seen by change in behavior or performance of a student. So advantages of learning objectives क्या है for student? अवेयरनेस है स्टूडेंट में अबाउट व्हाट इज एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द कोर्स. देन क्लैरिटी होती है स्टूडेंट्स को अबाउट द नॉलेज एंड स्किल्स टू बी एक्वायर्ड. एंड अवेयरनेस ऑफ द क्राइटेरिया बाय विच परफॉर्मेंस विल बी जज्ड. एंड फॉर टीचर्स, अवेयरनेस ऑफ व्हाट स्टूडेंट शुड बी टॉट, चूजिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज एंड प्लानिंग फॉर असेसमेंट एंड एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस लेवल्स. नाउ लेवल ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इसमें 3 लेवल हैं: इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए? एक ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मेजरेबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव अचीवेबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव रेलेवेंट होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंड होना चाहिए. 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं: रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, रिलेटेड टू प्रैक्टिसिंग स्किल्स एंड रिलेटेड टू इनकल्केशन ऑफ एटीट्यूड्स. राइटिंग एन ऑब्जेक्टिव, इसमें मेगर्स अप्रोच है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड अप्रोच है. इसमें 3 स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं. दैट इज फर्स्ट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, कंडीशन अंडर विच द परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड एंड द मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस. सो एक अच्छे ऑब्जेक्टिव में ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, पाल्पेट द लीवर इज ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट. कंडीशन अंडर विच द परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड, दैट इज इन ए चाइल्ड वी आर डूइंग. एंड मिनिमम एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज एक्यूरेसी ऑफ ±0.5 सेंटीमीटर. सो दीज आर द 3 criteria, 3 specific elements to write a good objective. ना क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए? सो इसमें 5 कॉमन सोर्सेज हैं जो मैंने यहाँ पे एनिमेट करे हैं. दैट इज क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, जॉब एनालिसिस, रेफरल पैटर्न्स, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स एंड कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स. सो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में क्या होता है? जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट को. जब स्टूडेंट एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उसमें किस एनवायरनमेंट में करा है एक्टिविटी परफॉर्म. सो बेस्ड ऑन दैट ऑब्जर्वेशन हम ऑब्जेक्टिव डिराइव करते हैं. देन देयर इज जॉब एनालिसिस. सो एक टीचर, एक फिजिशियन का जॉब इज एनालाइज बाय डिफरेंट पर्सन्स एंड देन वी क्रिएट ए लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. देन देयर इज रेफरल पैटर्न्स. सो रेफरल पैटर्न्स में क्या होता है? इट सजेस्ट व्हाट इज नॉट बीइंग डन. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर डायरिया में ORS नहीं दिया है, सो वी कैन इंक्लूड द ORS इन आवर ऑब्जेक्टिव्स. देन देयर आर मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स. सो इन मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स, सो जो जनरल और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंडीशन होती है, वी हैव टू प्रीफर दैट ओवर द रेयर डिसीजेस. देन कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे PG करिकुलम हो गया, NMC का, देयर आर कॉम्पिटेंसी लिस्टेड. सो दैट कैन बी आल्सो ए सोर्स ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव्स. My references for this slides are Principle of Medical Education 5th edition by Dr. Jitendra Singh. Thank you everyone. Like, share and subscribe.